नमस्कार आणि येवकार तुमका आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत आयच्या गोवा कनेक्टाच्या कार्यावळीत आयज माझ्याकडे असे गेस्ट जॉईन जाता जे आसा गोंय राज्याचे रिजनल PF कमिशनर नाव आसा तांचे अश्विनी कुमार गुप्ता. सर वेलकम टू द शो. थँक्यू. ओके, आता अश्विनी कुमाराबद्दल सांगप म्हटल्यार तांचो जन्म मध्य प्रदेशाक जालो. ताच्या नंतर तांच्यांनी PG डिग्री इन MS एप्लायड केमिस्ट्रीन शिक्षण घेतलें. तशेंच तांच्यांनी ते जॉईन जाले एज एन असिस्टंट PF कमिशनर इन EPFO आनी तांचे पयले पोस्टिंग असलें इन तेलंगणा आणि त्याच्या नंतर नागपूर. फुडें तांचें प्रमोशन जालें एज अ रिजनल PF कमिशनर ग्रेड 2 आणि ही वॉज पोस्टेड ॲट भोपाल आणि ताच्या नंतर ग्वालियर. आणि एप्रिल 2018च्यान ते गोंय राज्याचे रिजनल PF कमिशनर ग्रेड 1 ऑफिसर म्हणून काम करतात. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबको पता है कि EPFO क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ब्रैकेट में नहीं आते. बहुत सा देयर इज अ लॉट ऑफ नोशन कि हाउ डज इट वर्क आउट. देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन. सो अगर मैं आपको पूछूं कि EPFO अगर एक लेमैन को एक्सप्लेन करना है who doesn't fit in this bracket, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे आपका स्कोप ऑफ वर्क? Okay. First of all, thank you very much for inviting me over here. EPFO as an organization came into existence after the enactment of EPF and MP Act. It was done in 1952. It's a very old act, and later on slowly it grew, and now it is in the shape what we and you all can see on that. As a layman, for a simple person who is to say working in some establishment for the purpose of his understanding or for the purpose of understanding of a normal common citizen, I would simply say that EPF Act administers or runs or manages three basic schemes. One is Employees Provident Fund. Second one is Employees Pension Scheme. The third one is Employees Deposit Linked Insurance Scheme. So, running of these three schemes is what EPFO does. And these three schemes are for employees who are working in an organization, in an establishment or company which is engaging more than 20 employees, 20 or more than 20 employees. Any establishment to say, wherever these employees are working, except for some establishments where there has been some relaxation given because they are having their own state government or central government run social security scheme. There EPF and MP Act doesn't come into picture. Okay. आपने you said कि any organization that has around 20 employees or more than 20 employees has to adhere to this EPFO scheme. Now, I would like to ask you one specific question कि अगर कोई employee है who is working in this particular setup, what is the kind of benefit that one gets? Now, just as you mentioned कि employee provident fund है, pension scheme है, then also deposit link insurance plan है. So all these things, how does it benefit for an employee and employer? Since it becomes a win-win situation, or is it कि there is a policy by the state, central government, and all the organizations are bound to be adhering to this? It's just simple statutory provisions which says that this act is to be implemented the day any establishment is engaging 20 or more employees. Now, what an employer does, or what is expected out of an employer, or what is expected out of an employee from this act or all these three schemes, to say, suppose an employee is working in terms of Goa, we can say, suppose the person is working in a resort, and that resort is having 25 employees. Total employees are 25, and automatically, since it is more than 20, the act is applicable on the establishment. There is no requirement of any directive from the department that that you are to start complying under the act. It's suo motu applicable. जैसे ही एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ 20 या 20 के ऊपर हुई, एक्ट अपने आप लागू होता है. एम्प्लॉयर को किसी नोटिस की या किसी लेटर की ज़रूरत नहीं है.
अपने आप लागू होता है ना। मान लीजिए आप वो रिजॉर्ट है और उसके ऊपर EPF एक्ट लागू हो गया, अब एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर जो है ये सरकार का एक एक्सटेंडेड आर्म है। जो एक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है वो ये है कि वो एम्प्लॉई की सैलरी से 12% डिडक्ट करेगा और मैचिंग कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से मिलाएगा, और ये दोनों कंट्रीब्यूशन EPF के पास में जमा होगी। हम वो कंट्रीब्यूशन को लेकर के उसको एज पर स्टैट्यूट जो नॉर्म्स डिसाइडेड हैं उसके हिसाब से हम इसको इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड जितने भी स्कीम से बेनिफिट हैं वो सब हम उसमें से दे पाते हैं। अब जो एम्प्लॉई का 12% आता है एम्प्लॉई का, वो पूरा का पूरा 12% एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। एम्प्लॉयर जो 12% मिलाता है उसके हम दो भाग करते हैं, एक 8.33% होता है और दूसरा जो भी उससे मिला जुला पोर्शन बचता है वो जो 8.33 है वो पेंशन स्कीम में चला जाता है। रिमेनिंग जो वो हम प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। अब ये दो हिस्से हो गए। अब इसके साथ में हम एम्प्लॉयर से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी लेते हैं टू रन द स्कीम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं 0.5%। अब एक हमने बताया कि एक स्कीम है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय को तो फ़ायदा होता है, इन केस एम्प्लॉय से मेरा मतलब है जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन है, जो उनके नॉमिनीज़ हैं, उनको एम्प्लॉय के अनफॉर्चुनेट डेथ पर उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एम्प्लॉय को कोई उसमें प्रीमियम जैसी कोई चीज़ जमा नहीं करनी होती। एम्प्लॉयर एक बहुत छोटा सा अमाउंट उसमें जमा करता है और इसका भी कोई हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह भी नहीं लेते। 2017 तक हम इस इंश्योरेंस स्कीम को रन करने के कुछ चार्जेस भी लेते थे। अब 2017 के बाद से वो भी बंद हो गया। तो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर हमारे पास जमा करता है वो है 12% प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, और EDLI के लिए जो छोटा सा अमाउंट है दैट इज़ अगेन 0.5% वो जमा करता है। ये पूरा पैसा लेकर के हम इसको अपने नियम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, और जब वर्कर को पैसों की ज़रूरत होती है तब वो एडवांस के तौर पे उसमें से PF के पैसे में से निकाल सकता है। जब वो किसी दूसरी नौकरी पे जाता है तो वो पैसा हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ जाता है। और रिटायर होने के समय यानी जब आप 58 प्लस हो जाते हैं, जब रिटायर होते हैं, तब उस सर्विस के हिसाब से उन पैसों से हम पेंशन देते हैं। उसको भी पेंशन मिलेगी, उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगी, 2 बच्चों को पेंशन मिलेगी। इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ हम उसके नेक्स्ट इन किन को इंश्योरेंस का बेनिफिट देते हैं, पेंशन का बेनिफिट देते हैं। PF में जितना एक्यूमुलेशन है वो भी विद इंटरेस्ट उसको मिलता है। स्कीम पर से बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। इससे अच्छी बेनिफिशियल स्कीम सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं बनी। तो ये मेरे हिसाब से वर्कर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। एम्प्लॉयर को ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है हमने उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत दायरा उसके आसपास बना दिया है, ताकि उसको कभी भी किसी इवेंचुअलिटी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। सेम थिंग गोज़ फॉर द एम्प्लॉय ऑल्सो, कि वो भी एक तरह से संतुष्ट हो जाता है कि मैं इस एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे लिए मेरे भविष्य की चिंता हो रही है, जो मेरा एम्प्लॉयर बहुत ईमानदारी से कर रहा है। ओके, एक इंटरेस्टिंग कहा कि आपने गोवा में एग्जांपल दिया इज ऑफ अ रिजॉर्ट। नाउ रिजॉर्ट हैज इट्स ओन एम्प्लॉइज और कोई वेंडर्स भी रहते हैं, तो इज इट एप्लीकेबल फॉर द वेंडर्स आल्सो कि उसका कोई क्राइटेरिया डिफरेंट है? ऑब्वियसली इट इज द मिनिमम एम्प्लॉई स्ट्रेंथ दैट यू वांट टू हैव। अगर एक रिजॉर्ट में मान लीजिए 100 आदमी काम कर रहे हैं टोटल, एंड उसमें से पर से दैट रिजॉर्ट इटसेल्फ इज हैविंग ओनली 20 एम्प्लॉइज, remaining 80 employees are engaged through say some manpower supply agency, security guard hai, some third party, some contractor. For that also, that resort which we consider it as principal employer,
वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। या तो वो खुद जमा करे या फिर कॉन्ट्रैक्टर उसका उन एम्प्लॉयज़ का पैसा जमा करेगा और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास उसको बराबर से सूचित करेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन इज, when it comes to strength, like for example the kind of number of employees that are engaged with you or maybe employers engaged with you, and also the kind of sum that you handle, especially with respect to Goa office. Okay. In Goa we have around 5,800 odd total establishments which are registered with Goa EPF office. Out of them roughly around 2,900 odd establishments they are complying with, because this figure changes, so we can say roughly around 2 lakh subscribers we are having. Every month nearly 2 lakh subscribers का पैसा हमारे पास जमा होता है, जो लगभग 2,900 establishments से हमारे पास आता है। जो रिमेनिंग लगभग 200-300 एस्टैब्लिशमेंट बच जाती हैं, उनमें से कई ऐसी होती हैं जो बंद हो गई हैं लेकिन उन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है या किसी कारण से पैसा नहीं भर पा रहे हैं, या अधिकतर इसमें कॉन्ट्रैक्टर एस्टैब्लिशमेंट होती हैं जिन्होंने कोड नंबर तो ले लिया लेकिन कंप्लायंस नहीं किया, उनको काम नहीं मिला। तो ऐसे भी कई सारे एस्टैब्लिशमेंट होते हैं। ओके, अगर कोई एम्प्लॉई वांट टू एनरोल, लाइक फॉर एग्जांपल, दो क्वेश्चन है सर मेरे, कि एक तो डिजिटल एज है, एवरीथिंग इज फास्ट, सो वी नीड फास्ट डिस्पोजल ऑफ सर्विसेज, वन, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट, कि हाउ डज वन गो अबाउट, वेदर इट इज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, क्या प्रोसीजर, इफ यू कैन जस्ट टेल मी इन ब्रीफ। सी, EPFO works for both the stakeholders, that is employees as well as employers. For employers, we have a very transparent mechanism so that they can register themselves. There is a portal, central government has made that, there is known as Shram Suvidha portal. Through that portal, employers can register their establishment, and the process is pretty user friendly. The moment you register yourself, you complete the process, code number is automatically generated. You need not have to wait for a few days or something. It is the moment you have submitted, uploaded the documents, आपका कोड नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होकर के आपको मेल पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड सिंस एवरीथिंग इज डिजिटाइज, सो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भी मेल से मिल जाता है। यू कैन स्टार्ट कंप्लाइंग। दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयर। फर्दर सेकंड चीज़ आती है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के का कंट्रीब्यूशन अपने पास जमा करके रखता है और अपना शेयर भी मिलाता है, वो भी ऑनलाइन जमा हो जाता है। वी हैव इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिसिप्ट सिस्टम, जिसमें हम एम्प्लॉयर अपने पोर्टल से ये पैसा बहुत आसानी से ECR के माध्यम से जमा कर सकता है। ओके, देन एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट ये है कि हम एज आई कैन से फॉर गोवा ऑफिस, हमारे पास नियरली 99% क्लेम ऑनलाइन आते हैं बाय बोथ द मीन्स। हमारे पास एक सेंट्रल का पोर्टल है जिसे उमंग ऐप कहते हैं, उससे भी लोग करते हैं, और हमारा अपना पोर्टल जो है जिसमें एम्प्लॉई का अलग से एम्प्लॉयर का भी पोर्टल है और उसमें एम्प्लॉई का भी पोर्टल है, उसमें से भी वो क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्लेम फाइल करना ऑनलाइन बहुत आसान है, किसी तरह का कोई हैसल नहीं है उसमें। आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया वो डॉक्यूमेंट अगर बराबर से सब स्कैन किया हुआ है तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती। पुराने सिस्टम में मैनुअल में आप फिजिकल क्लेम लगाते थे, उसमें पेपर कभी इधर उधर हो सकता था या आप लगाना भूल गए तो क्लेम बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी हो जाता था, रिटर्न हो जाता था कि आपने ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। अब इसमें ऑनलाइन आप बराबर से चेक कर सकते हैं। जब इसमें चूँकि आपका डेटा सब अगर अप्रूव्ड है, आधार, बैंक अकाउंट एंड योर मोबाइल नंबर इज़ प्रॉपरली लिंक्ड, तो एम्प्लॉई को किसी की भी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयर के पास वो अपना क्लेम जमा करता था, एम्प्लॉयर उसको साइन करके चेक करके फिर हम फिजिकली PF ऑफिस में जमा करता था। अब वंस द डेटा ऑफ वर्कर इज सर्टिफाइड, वेरीफाइड बाय द एम्प्लॉयर, तब अब तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वो क्लेम पोर्टल पे जाना है, अपना जो रिक्वायर्ड क्लेम है वो सेलेक्ट करना है,
डेटा फिलअप करना है और सबमिट कर देना है. Okay, It will directly come to EPF office. Okay. Another important thing is बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. EPFO happens to be a subconscious investment जहाँ पे हमारा directly cut होके share is gone to the EPFO office as well as the employer भी pay करता है. Now I just want to understand the interest part of it. Like in 2018-19 में it was 8.65% that was the interest. उसके बाद कट होके 19-20 में it went on to 8.5. I think last year it was same, but अभी for the year of 2021 and 22 the interest rate is 8.1%. I want to ask you a very specific question: is with this less interest rate now, how is it impacting all the account holders basically? See, rate of interest थोड़ा कम हुआ ज़रूर है. And see what is the rate of interest which EPFO gives as of now. It is, as you compare with any other to say financial instruments available, it's still far better. And it is monthly compounding also. So rate of interest is good. Definitely as compared to last year, 8.5 say it has been reduced to 8.1. So that is a policy decision taken by due diligence. After a lot of deliberations, it has been finally decided. So this is the thing. That's whatever minor impact will happen. But the reason why it has been revised is because as the finance minister says that it reflects the today's realities. Is it because of maybe COVID or maybe the kind of economic situation that we have seen for the last 2 years? Is it the repercussion? Yeah, I would like to ask you, maybe what is your view? See, due to COVID and all, we have done a lot of things. As EPFO has been in forefront on this fight against corona. We did whatever best we can in terms of providing timely assistance to working class as well as employers. And we during that entire period we were working also. So to say, we introduced one new advance which was called COVID advance. So in the first phase, the COVID advance 1 was there. Then we have introduced another type of same kind of advance. Again it was introduced. And during this period, what we have observed here in Goa, that most of the people, they try to withdraw their amount because of so and so needs. And situation was definitely very alarming. So last year, so was in this year also, in 2021 we had roughly around 30,000 claims were filed for COVID category, because advances in EPFO are in very different types. Say for illness you can take an advance, for house building you can take an advance, for education of children you can take advance, for marriage, self and your dependents. All these types of advances are available for the subscribers. Okay. To add on to it, this new advance was introduced. Subsequently, a lot of people have withdrawn their entire accumulation also, because of they were not having enough employment. So in this year, total we can say, we have settled around 1,53,700 odd claims, were amounting to roughly around 625 crores was disbursed. This is the Goa market that we are talking This is Goa office. Out of this 625 crores, roughly around 63 crores were only advances, COVID advances. So situation worldwide, or to say at least in India or in Goa, the situation was alarming. People were withdrawing, a lot of their accumulations were there. Plus for employers also, we have initiated a scheme which was Atmanirbhar Bharat Yojana. Usme we have introduced a scheme wherever there was a new employment, to
to say incentivize creation of new employment. This scheme was introduced for the benefit of employers. Wherever the employer has engaged less than 1000 employees, in that case entire 24% was being borne by central government. And for some smaller establishments, around 12% was being reimbursed by central government. That was the benefit given to the employer to keep engaging new employees, new generation of new employment. So EPFO in way kind of facilitated more and more employment generation. So whatever we can do for this period, we have done our best. Okay. With respect to an entire investment palette that usually person has, it's always nice to have EPF. और जैसे आपने कहा कि withdrawal का भी जो occasions और limits है, it is as per the reasons that you have. So apart from that, also you introduced COVID advances during COVID time, which helped a lot of people. I was just comparing some of the traditional mediums like. You have a Sukanya Samruddhi Yojana which gives 7.6%. You have a senior citizen savings scheme which gives 7.4%, and you have PPF which gives you 7.1%. Now these are very traditional non-equity investment, and yet to have EPFO, Employee Public Provident Fund, which is at 8.1%. So I think it's still above the other mediums that are there, which are for investment. Another issue that has happened, and I think which will be implemented from the 1st of April 2022 is the center planning to tax Employee Provident Fund (EPF) contribution exceeding to 2.50 lakhs yearly, and for government employees the limit has been set higher end at 5 lakh. Now I just want to understand is what is your view, because this is something that new has been introduced, and how do you break the jinx, because there are a lot of speculations here also. See, this is as a new policy, and we are in a mode to come up with the calculations of that to make accounts accordingly. So we'll be bifurcating the accounts in a way to suit the new law, and it would be a bit too early to say anything on that. But as and when things go in a very proper shape, then we can comment on that. But as a policy, it's to be taxed that if the contribution is more than 2.5 so of the employee share. Okay. So then we can see what actually emerges out of it. But our main issue in this is how to go about with accounting process in that. So we are in that process as of now. Okay. A very important thing is, your EPFO Goa has been awarded with an ISO certification. Now, obviously, there are a lot of companies here. Obviously, there are government institutes here also that have got ISO certification. How important it is to have is it a proud moment for you to be part of this organization? Because this has just happened, I think, this March or February that you have been awarded this ISO certificate. So it was definitely a proud moment for the entire office, because see, a lot of developments have been happening for last 2-3 years, and we are looking forward to have a good amount of say benefits to the subscribers, and we want to set a proper benchmark on that. So as a matter of benchmark, we have ensured about the decent cleanliness in the office, timely claim settlement, timely giving of any assistance to whosoever is coming to the office, and also to the employers. Lot of transparency in the process has come up, and which has certainly affected or made not only the subscriber or beneficiaries or anybody who is associated in any way with EPFO. They can, I can vouch for that, they are very happy about the services being given. In terms of grievance handling, in terms of giving timely benefit, online facilities,
All these things are being taken into account, and accordingly the Goa office team has got this ISO certification. It's an achievement which we really cherish, and it's a team effort. Okay. More of my entire office team, it's their to say an acknowledgement of their hard work. Okay. Great. Finally, I'm running out of my time, and if I can ask you one final question is, what would be your advice and suggestion to all the employees and employers here in Goa? Okay, I will start with employees. What my personal experience has been there for last 2 years is I am seeing more and more people are unnecessarily withdrawing their provident fund. Provident fund, what you call भविष्य निधि, ये वर्कर के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए है, जब उसको एक्चुअली उसकी ज़रूरत होगी. अभी जो हम देखते हैं कि आए दिन एडवांस क्लेम करते रहते हैं किसी न किसी नाम से. अभी ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत फ़ायदे हैं, तो उसका एक ड्रॉबैक भी है कि लोगों को हाथ में पता लग जाता है मोबाइल पे कि मेरे खाते में कितना पैसा है. What happens is now there is no check to say. Should not use the word check by the employer, but at least employer was a bit advising in that nature. Most of the employers used to advise the employees not to withdraw unnecessarily. Keep the money safe, because it's a money not only meant for you, but it is also meant for the nation also. Correct. This money is being invested in government securities, and it is being used for the building of nation, and then it is with interest it is being returned to you. Since you are having that data with you, कितना amount जमा हुआ है, कितना उसमें interest मिला है, and everything, you should be secure and safe. It's with EPFO, it's not going to anywhere. जब आपको एक्चुअली ज़रूरत हो तभी पैसा विड्रॉ करें, अननेसेसरी पैसा विड्रॉ ना करें. जब आप रिटायर होते हैं तभी आप पीएफ का पूरा विड्रॉ करें. जब आप रिटायर नहीं होते हैं तो आप पैसे को ट्रांसफ़र कर लें, किसी भी जगह जाते हैं. जो भी आपका पीएफ का एक्यूमुलेशन है उसमें आपको रिटायर होने तक पूरा इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपने अगर 3-4 साल काम नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना बंद हो जाएगा. इंटरेस्ट आपको 58 के बाद भी मिलता रहता है 3 साल तक. तो पैसा कहीं नहीं जा रहा है. हड़बड़ी में पैसा न निकालें और पैसे को संभाल के रखें. आने वाले समय में जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होगी तो आपको साइजेबल अमाउंट मिल पाएगा. ये मेरी एकमात्र रिक्वेस्ट एम्प्लॉइज से है. और उनके अवेयरनेस के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रोविडेंट फंड आपका कट रहा है या उसका बेनिफिट मिल रहा है, और आपके किसी दूसरे व्यक्ति जान पहचान में किसी मित्र को, किसी जान पहचान वाले को नहीं मिल रहा है, तो उसको आप बताइए कि ये स्कीम काम की है, इसमें आपका पैसा, एम्प्लॉयर का पैसा मिल करके विद इंटरेस्ट जमा हो रहा है. इससे अच्छी स्कीम आपको कुछ नहीं है. साथ में आपको एक मॉरल सेटिस्फेक्शन भी है कि ये पैसा आपका सरकार के दूसरे कामों में खर्च हो रहा है. तो खुद भी आप प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट लीजिए, दूसरों को भी अवेयर करिए, जागरूक बने और जागरूक बनाएं. दिस इज़ फॉर एम्प्लॉइज. For employers, what I want to say is that make sure that all eligible employees are getting benefit under EPF and MP Act. टाइम से पेमेंट कर दें, अदरवाइज़ हमको पेनल्टी लगानी पड़ती है, उस पर हमको इंटरेस्ट क्लेम करना पड़ता है. वो भी उतना ही अमाउंट हो जाता है जितना आपका कंट्रीब्यूशन आता है. तो इट इज़ नॉट अ प्रूडेंट प्रैक्टिस एज़ पर बिजनेस कि आप उसमें जो आपका मान लीजिए 1000 रुपये आप उसमें कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे हैं, उसमें 1000 रुपये आप पेनल्टी भी जमा करें. दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल. So deposit provident fund with respect to all eligible employees and deposit in time. Okay. For principal employers, I will say that ensure that all the contractors are covered under the act. अभी ऐसा देखने में आया है कि कई जगहों पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स इस बात की अनदेखी करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी उसको ठीक तरीके से उसका पालन नहीं करता है. आने वाले समय में हम लोगों ने अभी पिछले महीने जो हमने रिकवरी के एक्शंस लिए हैं, वो हम अगले महीने फिर उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे. हमारे पास अभी रिकवरी करने के लिए, एम्प्लॉयर से रिकवर करने के लिए बहुत पैसे पड़े हुए हैं. अभी हम लोग सिर्फ 4-5 करोड़ ही अमाउंट अभी हमने रिकवर किया है. अभी अनदर सिमिलर अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग. सो वी विल बी फोर्स्ड टू टेक सम
लीगल एंड कोअर्सिव एक्शंस, सो बेटर ये है कि आप अपना प्रोविडेंट फंड टाइम से जमा करिए और आप भी सेटिस्फाइड रहिए, आपका वर्कर भी सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड है. Okay, Ashwini ji, thank you very Thank much you for very joining us here in the studio and sharing your valuable thoughts with respect to EPFO. I think या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां जी माहिती जाय आसली ती तुमच्या मेरेन पावल्या आसतली. देव बरें करूं, तुम्ही हो कार्यक्रम पळयलो. Ashwini ji, again, thank you very much for joining. It was pleasure to have you. Thank you. Thank you.